everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Priyasha Das, and today in this video we'll be discussing how would I prepared for the CMAT Innovation and Entrepreneurship section if I had been the CMAT aspirant. Now, why is this important to you people? Because the major context of this video is around understanding what's the correct method of starting to study for the Innovation and Entrepreneurship section. And let me tell you, when it comes to subject matter expertise, of course you can rely on Priyasha Das, because whether it is CAT verbal or ZAT decision making or XGMT's emotional quotient and GK series, I take pride to tell you that more than 14 questions came directly from my videos in the examination, same to same, without a single word changed. Now, how is this all happening? Because my research work is a kind of thing which is matching with the question paper setter. यानी मेरा तरीका काफी सिमिलर है टू द फोक्स हु आर एक्चुअली मेकिंग पेपर. तो वही तरीका, वही मैजिक स्पेल आज हम सीखेंगे इन दिस वीडियो रिगार्डिंग इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप सेक्शन फॉर द सीमैट. सो लेट्स गेट द वीडियो स्टार्टेड. The proper process of really getting started with the CMAT Innovation and Entrepreneurship section is to go and get started with the previous year papers. So if you don't have access to the previous year papers, you can either go to various websites and download it, or if you want me to do that for you, I can very well do that and keep it in a folder. The place is where you will see in the Mega Drive link that's present in the bio of my Telegram group. I'll right away add the link in the description box. So you can go and get it from there. Now, once you have the previous year paper, the way how folks use this information is very different and very wrong to certain extent. Why? Because उनको लगता है कि पहली बात तो जो previous year question papers में है उसे अच्छे से समझ लेते हैं, उससे अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो हो सकता है chances है कि वो फिर से आ जाए. हम previous year papers इसलिए नहीं पढ़ते because वो फिर से आएगा. हम उसे इसलिए पढ़ते हैं because हमें उससे number one पैटर्न पता चलता है, नंबर 2 उससे रिलेटेड वर्ड्स डेफिनेटली एग्जामिनेशन में फिर से आ सकते हैं, एंड नंबर 3 उससे हमारा एग्जाम फेयर चला जाता है अगर हम उसे एज अ सेक्शनल देते हैं तो. So these are the 3 benefits you will gain out of giving the previous year paper. But how I segregated and spend around 5 minutes with each question is really going to blow your mind up. So let me just tell you in detail what I did with the help of an example. All right. So first what I do is I read the question and then I make 5 columns. Okay. These 5 columns are: number 1, the subtopic to which this question can belong to. Number 2, it can be the various sources from which I can study it, like any website, any PDF I have, or any book that I already have from where I can study about this. Third is the place from where I can make a small example about it. Now, when I say making a small example about it, it's more of like, अगर मैं bankruptcy के बारे में पढ़ रही हूँ तो मैंने जो समझा, I would just implement it with a small sentence. If I do that, this will not only benefit you for your coming examination, but will be thoroughly good for you for your own personal benefit and of course your GDPI rounds. Because when it comes to MBA, you are expected to know these terms well in advance before entering to the B school. The fourth column would be a very essential one, that is picking out the major keywords. तो जो भी क्वेश्चन के अराउंड ऑप्शंस में या उसी क्वेश्चन स्टेम में आपको कीवर्ड्स दिखते हैं which are having quite a high chances of getting repeated or coming in the next year as well, उन क्वेश्चन कीवर्ड्स को आप अपने कॉलम में लिख लो. The fourth column, which is that of the keywords. And the fifth and the final, the most important columns is the related current affairs and the related static GK. Now, what do I mean by that? I mean कि generally इस तरह के CMAT के examinations में आपको बहुत deeper current affairs या static GK नहीं पूछा जाता है. What they are majorly concerned about is the extremes. Now, when I say extremes, I mean the first, the last, or the biggest, or the smallest. So, आप किसी एक example को ले लो. Someone legally appointed to sell off their assets of a bankruptcy or bankrupt firm is called as an auctioneer, liquidator, terminator or an advocate. ठीक है, तो उसको liquidator बोलते हैं, ये तो आंसर है. बट इस पे मैं अपना एनालिसिस कैसे रन करूं? So the first part of analysis will be finding out what are the subtopics, and when it comes to the subtopics, I will be calling it as some legal aspects related to bankruptcy. राइट, ये हमारा सब टॉपिक्स हो गया कि बैंक्रप्सी में भी हमें लीगल एस्पेक्ट्स पता होने चाहिए.
So this will be my subtopic. The second column would be that from what good sources can I study it. तो मैं क्या करूंगी, मैं जाके फटाफट से गूगल चाचा के पास जाऊंगी और वहां पर जाके बैंक्रप्सी टाइप करूंगी. तो जब मैंने एक बैंक्रप्सी टाइप की तो आई गॉट वेरियस रिसोर्सेज इन ब्रिटानिका, इन्वेस्टोपीडिया, जहाँ पे मुझे लगा कि मैं इसका डेफिनेशन और एग्जाम्पल देखूंगी तो मैं बेटर समझ सकती हूँ कि बैंक्रप्सी का कॉन्सेप्ट क्या होता है. And that is the thing I will be doing in the second column, writing down those website names or the PDF or the books in which I can study this from. The third column will be definitely citing an example of the same. तो जैसे ही आप उसके बारे में पढ़ते हो from the various websites, you get an idea of what happened. And then you can cite an example कि oh मेरे knowledge में ऐसा है या फिर this happened in this company. Maybe that helps you to frame an understanding of bankruptcy completely. And उसके बाद चाहे आपको कोई नींद से ही उठा के क्यों ना पूछ ले कि बताओ भला बैंक्रप्सी क्या है, तो आप एटलीस्ट उसका जिस्ट तो डेफिनेटली बता सकते हो. Now coming to the fourth point, which is the most important column out of all the four columns, that is the major keywords, because इसमें है potential questions for your coming examination. तो जब हम मेजर कीवर्ड्स उठाएंगे तो इस क्वेश्चन से कीवर्ड्स हो सकते हैं बैंक्रप्सी, ऑफ कोर्स. दूसरा कीवर्ड हो सकता है एसेट. दूसरा थर्ड कीवर्ड कैन बी ऑल दी ऑप्शंस विथ यू, लाइक व्हाट इज ऑक्शनर, व्हाट इज लिक्विडेटर, व्हाट इज टर्मिनेटर एंड व्हाट इज एन एडवोकेट. So altogether, I found out 6 important keywords from this question itself. Interesting, isn't it? And then the last column would be to search about the current affairs and the static GK related to bankruptcy. तो जब मैंने कंपनी के बारे में सर्च किया तो फॉर द स्टैटिक जीके पार्ट आई एक्चुअली सर्च व्हाट इज द फर्स्ट कंपनी टू फाइल बैंक्रप्सी, एंड आई गॉट लेमन ब्रदर्स हु फाइल्ड द बैंक्रप्सी इन 2008, which was the largest bankruptcy in the history of US. So you can remember this one point. And when I talk about the current affairs related to bankruptcy, then मुझे एक बहुत common company का नाम मिला, which is Body Shop. So Body Shop अपनी bankruptcy की वजह से अपने कुछ shops को बेच रही हैं. So this gave me an idea about bankruptcy over here. So this is how I fill all the 5 columns. Now it sounds lengthy, right? But this is how you can make sure कि आप जो पढ़ रहे हो वो आप fully retain कर पा रहे हो और आप उसको अपनी होलिस्टिक डेवलपमेंट में यूज कर पा रहे हो. बिकॉज सिर्फ क्वेश्चन पेपर दे के पास करना इज नॉट इनफ. आप एक बार कॉलेज चले जाओ, या तो आपको इंटरव्यूज पास करने होंगे, और अगर सपोज करो आप टॉप 20 स्कूल्स की बात करो जिसमें जो सीमैट के स्कोर्स लेते हैं जिसमें GDPI नहीं होता, तो उसमें एक बार कॉलेज में जाने के बाद भी आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, सो दैट यू स्टे इन द टॉप 10% ऑफ योर कॉलेज. And that's for the video, guys. If you enjoyed it, make sure you hit that like button. मुझे नहीं पता आपको आज से पहले कभी भी किसी ने अपने वीडियोस में ये सब कुछ एक्सप्लेन किया है या नहीं, बट अगर आपको ये वर्थ इट लगा तो डेफिनेटली लाइक दिस, शेयर इट विथ more and more people, because when you share, only then this community grows. Remember, ये कम्युनिटी सिर्फ और सिर्फ आपके वर्ड ऑफ माउथ से चल रही है, सिर्फ आपके गुड वर्ड की वजह से ये स्प्रेड हो रहा है. There is no marketing involved over here. So therefore, make sure that you revert back to me with sharing more and more, and comment below and let me know how did you like this video. And most importantly, if you have any related questions, comment section is open. And if you want to discuss your career related aspects, then you can DM me on Instagram. But don't forget to follow me first, because अगर पहले DM कर दोगे और follow बाद में करोगे तो आपका message कहीं खो जाएगा. And it happens a lot of time with my other people. So that's why I keep asking them to follow first and then send a message, so that I get a instant pop-up that किसी ने मुझे message किया है. Alright then guys, take care and see you in the next video. Till then, study hard and let me know if you need my help. Thank you. Take care. Bye-bye.